A lot of students think of RBI exam as IES ka cousin. Same economics, same vibe, maybe a backup option. But you know what? That framing undersells it. RBI DPR deserves its own in-depth video, its own eligibility rules, its own exam pattern, and its own career path inside India's central bank. So today, that's exactly what we are going to do. Welcome back to Econiti. I'm Komal, and this is the fifth video in our career roadmap series for economic students. We have covered a lot of ground so far. जो broad exam landscape है, how RBI, UPSC and IES compare, economics optional पे deep dive, IES in full depth. आज हम बात करेंगे RBI grade B. It will get the same treatment because it is the unseen engine room that shapes the monetary policy. Okay, so let's get started. First of all, what is RBI grade B DEPR? DEPR, I've said it again and again, it stands for Department of Economic and Policy Research. ये RBI का internal economist cadre है, bank's own in-house research and analysis wing. ठीक है. Quick clarification before we go further, I'll come back to this slide. RBI grade B actually has 3 tracks. So usually I only talk about generalist versus DPR distinction. But क्योंकि आज हम RBI के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं, so we should talk about all the 3 tracks that there are. We know that there is general. This is broad managerial and regulatory officer role. Then there is DEPR, जो specialist economist track है. Economics is the job itself. And finally, there is also DSIM, which is the Department of Statistics and Information Management. It's a separate specialist track for statisticians. So DSIM officers handle data modeling, statistical surveys, and forecasting. And their eligibility is built around a master's in statistics or a closely related quantitative field, not economics. So if you are an economics student and you are asking a question like, should I prepare for RBI grade B? The sharper and more accurate question is that should I prepare for RBI grade B DEPR? क्योंकि DSIM typically economics background के लिए नहीं built है and generalist तो economist के बारे में economics के around built ही नहीं है. You can still go for these exams, but these are quite different. ठीक है. DEPR officer, let me go back to this slide. काम क्या रहता है? DEPR officers work in areas like inflation, monetary policy, macro research, external sector, financial markets, banking and credit. And उनके काम का output क्या होता है? You have forecasts, you have reports, policy notes, है ना? And all these data that actually feed RBI's decision. हाँ, जो भी decision making होती है वो इन्हीं सब data के basis पे होती है, right? So this is where we stand in terms of RBI. Again, to reiterate, ये line याद रखना, पहले भी हमने यूज़ की हुई है. UPSC CSC जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाते हैं, IES से गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट्स बनते हैं एंड RBI DEPR से सेंट्रल बैंक इकोनॉमिस्ट बनते हैं. ओके, ऑलराइट. तीनों में ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अगर ऑप्शनल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भी है तो भी इट हेल्प्स. बट तीनों का काम, स्कोप और इंस्टीट्यूशन तीनों अलग अलग है. नाउ लेट मी ट्राई टू सेल RBI टू यू कि वाई इज इट अट्रैक्टिव. आई एम जोकिंग. मैं 4 रीजंस दूंगी. आई कीप इट ऑनेस्ट, आई नॉट यूज मार्केटिंग लैंग्वेज, क्योंकि कौन सा मैं RBI में बैठ के तुमसे काम निकलवा रही हूँ, है ना. तुम्हें RBI जाना है, तुम्हारा वो है, बट इट इज़ आई स्टिल गिव यू वेरी वेरी यूजफुल reasons, strong reasons why you should find it attractive. Number 1, ये एक economics heavy काम है directly. Mostly government jobs में economics indirectly use होता है ना. Economics is a way of thinking. Whenever you learn economics, it will be used all across your work, even your life. Sometimes fortunately, sometimes unfortunately. लेकिन DEPR में, just like IES, your economics training will be your job. So if you genuinely enjoy macro, monetary economics, banking, Indian economy और साथ साथ में data, this is a natural fit for you. Number 2, there is real institutional prestige. है ना. RBI is not just another employer. भाई वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है. Its decisions, whatever it takes, it
affect the entire economy. So the policy relevance of this work is genuinely very significant. Number 3, compensation and lifestyle. भैया strong, बहुत बढ़िया. RBI Grade B is widely seen as one of the best government sector jobs in terms of pay, benefits, and the institutional environment. एक तो you will be able to get out of Delhi if you are trying to. You will be in Bombay. Plus you have a gross salary of around 1.5 lakh महीना. Total CTC, if you include everything, accommodation or boosted benefits, go up to a very high number, 27 to 30 lakhs. Now मैं ये numbers transparency के लिए दे रही हूँ, ये selling point है, but if money is your crucial deciding factor, then of course you should go for corporate, और इससे बेहतर options हैं. इस केस में ये एक bonus है, given all the other points. A good salary, a good pay, a good balance of work and life is a very good bonus. Okay. Number 4, it is a focused exam. So तुम्हारा competition serious रहेगा, लेकिन random generalist pool like your UPSC CSE वैसा नहीं होगा. It is going to be a specialist pool, right? Just like your IAS. You will have economics trained candidates who will be preparing specifically for this. Not everyone prepares for this also. So not all economics candidates. उसमें भी बहुत specialized pool. Alright. So here is my honest take. If you are genuinely strong in economics, तो DEPR आपके लिए बहुत rational choice है. Easy नहीं है, but definitely काफ़ी rational choice है. और काफ़ी realistic choice भी है. With that, let's come to eligibility and vacancies. यहाँ पे I'll just keep the facts tight. The core eligibility requirement is a postgraduate degree in economics. या फिर कोई closely related field. RBI gives a list of what all related fields you can have a master's in, but master's होना चाहिए. ठीक है. कुछ minimum aggregate marks specified होते हैं, usually 55% for general category and lower 50% for reserved categories. Age limit is 21 to 30 years, and reserved categories as well as MPhil and PhD holders के लिए there is relaxation. अगर तुम BA में हो, right, this is important, you cannot directly target DEPR until you complete your postgraduate degree. Even if you are in your MA first year, you cannot sit for this exam. You have to have your provisional mark sheet or degree for this. लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, कर रहे हैं, तो RBI एक serious real option है for you. Now let's look at the vacancies over here. 60 total grade B vacancies आई हैं इस साल 2026 के लिए. उसमें से 40, the largest number is always for the general track. 10 DEPR और 10 TSIM के लिए है, ठीक है ना. So yes, this is not a big number, just like IES seats कम है. ये एक volume exam नहीं है, this is a specialist exam, right? The real selling point is the quality of the role. काम क्या है, कहाँ बैठते हैं, क्या institution serve करते हैं, not the number itself. So small, but because of all the reasons that I have specified earlier, very desirable target and also a realistic doable target, much higher hit rate because of the specialized competition that you have. ये जो exact number है वो हर साल change होते रहता है, तो always verify from the official RBI notification for the particular cycle that you are targeting. Now let's get to exam pattern. यहाँ पे अच्छे से clarity की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर when you are looking for DEPR या RBI grade B लिखते हो, वो जनरल स्ट्रीम का तुम्हें दे देते हैं, ठीक है ना. सो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, एंड हाउ ऑल्सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जनरल स्ट्रीम. फुल प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन अक्रॉस 3 phases. Phase 1 to 3. Phase 3 इज द इंटरव्यू. Phase 1 में 2 पेपर होंगे. पेपर 1 इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, 65 क्वेश्चंस, 30 of 1 mark, 35 of 2 marks, 33% नेगेटिव मार्किंग, ठीक है. ये हो गया ऑब्जेक्टिव. Phase 1 में ही there's another paper in English which is in descriptive format. So what you will see the questions on the screen and you will have to write. Important है कि आप English ignore ना करें. It contributes to shortlisting, क्योंकि भाई इस job में communication genuinely matters. So you don't just need to know economics, you have to be able to write it. So English is very important. Now this is
basically they want to test language. It is colonial hangover that they are testing English. लेकिन English के अलावा there's no other language that everyone can do it in our country, right? So whatever be the reason, the thing is that language has to be tested. Now the language over here is English and you cannot ignore that. Okay, then phase 2 has descriptive economics papers. जनरल स्ट्रीम में 3 होते हैं, एक फाइनेंस और मैनेजमेंट का भी होता है, लेकिन DEPR में नहीं होते हैं. इसमें सिर्फ प्योरली इकोनॉमिक्स फोकस्ड क्वेश्चंस होते हैं अक्रॉस बोथ द पेपर्स, right? So this is where you write your analytical answers, you build structured arguments. Then finally you have the interview, phase 3, the final personality and subject knowledge round. So that is your 3 phases. So if I had to summarize this entire exam philosophy in one line, RBI DEPR ka exam, it tests 2 things. First, can you think like an economist? And second, can you communicate like an economist? This is the entire exam. 2026 ka cycle mein phase 1, just some dates. Phase 1 was held on 13 तारीख June abhi, and phase 2 is going to be on the 26th of July. Now let us move to syllabus. Let's see how it's actually structured. I won't read out the full syllabus line by line. इस वीडियो के लिए यूजफुल नहीं है. Already we had a live session discussing the syllabus in a lot of detail. यहाँ पे we will not do that. लेकिन I want to show you the real structure क्योंकि काफ़ी clean है. In fact, RBI itself has done the organizing for you. Phase 1 is the objective paper, है ना. So ये एक wide net है. It covers 8 areas जो यहाँ पे listed है, the usual economic subjects. ये पेपर जो है वो breadth test कर रहा है. Can you recognize and place concepts across the whole subject and do it quickly and accurately, right? This is your phase 1. ये screening के लिए है, although it is not qualifying. The marks count. Then phase 2 is where the real structure shows up, right? And it's built on 2 papers with 2 equally weighted modules. तो पेपर 1 क्या है? पेपर 1 माइक्रो एंड मैक्रो रहता है. पेपर 2 क्वांट और इंडियन इकोनॉमी रहता है. माइक्रो में यहाँ पे ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव स्टैंडर्ड कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज, all these Ricardo marks more heavily, right? Welfare economics, Pareto, Arrow, Coase, Sen, ये सारी चीज़ें. मैक्रो में यू हैव नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट थ्योरी, क्लासिकल केनीशियन सब कुछ, इन्फ्लेशन थ्योरी, फिलिप्स कर्व हो गया, टेलर्स रूल हो गया, राइट? देन यू हैव मनी एंड बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड BOP, राइट? देन पेपर 2 कम्स विद क्वांट. यहाँ पे मैथ मेथड्स लिखा है, इतना नहीं पूछते हैं. मेनली क्वांट में ऑल्दो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, टाइम सीरीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि टाइम सीरीज ही मैक्सिमम डेटा होता है जिसके साथ यू हैव टू वर्क इन RBI, राइट? ऑल द डेटा सेट्स, मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स दैट यू वर्क हैव अ टाइम सीरीज कॉम्पोनेंट. वो टाइम सीरीज ही होते हैं, तो टाइम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस यू ऑल्सो हैव, सो RBI mentions that basic applications of AI and machine learning also part of the syllabus. So which basically shows you that RBI is, updating this syllabus for where the field is actually going. Finally, Indian economy में हो गया तुम्हारा policy, trends, fiscal policy, monetary policy, RBI का functioning, banking, financial sector, inflation trends, external sector, sectoral developments across agriculture, industry, services. So RBI DEPR सिर्फ economics theory नहीं है, it's economics theory plus India plus current macro data, सारा कुछ combined, and phase 2 is actually going to give equal weights to each of these by design. All right, now the next thing that we are going to do is that we are going to compare RBI DEPR and IES. We covered IES in the last video, so ये comparison matter करता है also because most students they are usually taking both the exams, and if you are not able to decide or not decided, so it will help you make a more informed choice.
ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिमिलैरिटीज. आई गिव यू बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. पहले सिमिलर चीज़ें क्या हैं वो बात कर लेते हैं. दोनों ही स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, कोई जनरलिस्ट एग्जाम नहीं है. दोनों ही डिमांड करते हैं सीरियस कंसेप्चुअल डेप्थ अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है. देन बोथ आर हैवी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कॉम्पोनेंट्स, दोनों में ही है. सो यू नीड आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग, यू नीड टू बी एबल टू डू दैट, नॉट जस्ट रिकॉल. ठीक है. देन कैंडिडेट पूल दोनों का रफली सेम रहता है. The broad group is same. These are economics postgraduates who take their subjects seriously. All right. Now let's come to the differences, and this can matter for your decision. पहली चीज, scope. IES, like we talked in the previous video, it places you across government economic policy broadly. You could be working in finance, statistics, agriculture, commerce, planning. किसी भी वो 55 मिनिस्ट्रीज में से आप काम कर सकते हैं. RBI DEPR places you inside one institution. Much narrower, much deeper focus on monetary policy and macro financial stability. Nature of work, IAS officer का दिन can involve, fiscal policy, public finance, scheme design, development economics, sectoral analysis, right? Depend कि कहाँ post हुआ है. RBI DEPR officer का दिन will be centered on, inflation, tracking, monetary transmission, banking sector, financial markets, right? Macroeconomic forecasting, very important. All this work that feeds directly into RBI's policy decisions like the repo rate. Now, let's move to exam structure. This is very important. IES has multiple papers, including general studies and Indian economics with more breadth. DEPR is much narrower. So you have 2 pure economics papers. कोई finance और management paper नहीं है, कोई general studies paper नहीं है. DEPR rewards depth in fewer areas. IES is going to reward breadth across more. So once you look at the PYQs of both and you compare and you analyze, you will see कि IES में if you are asking a theory question, for example in GE 1, 2, 3, rarely will it be that the question will itself ask you to place the theory in a real world scenario or real world decision of the government or something that some policy action has been taken और उसको आप इस लेंस से देखो, या फिर आप कोई पॉलिसी एक्शन उठाओ और उसको कोई थ्योरी वाले लेंस से देखो. इट विल नॉट स्पेसिफिकली एवर आस्क यू टू डू दैट, वेरी वेरी रेयरली. Right? You should do that. That's what you should do wherever it's possible. तुम थ्योरी और पेपर 4 को, थ्योरी और रियल को लिंक करो, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये डिमांड नहीं करेगा. RBI में the question demands. So in 2025, for example, there's a question that asks you to evaluate the RBI's flexible inflation targeting framework that it has now from a Mundell-Fleming lens. So this requires that you have an in-depth understanding of Mundell-Fleming, right, which is a completely theory topic, and you fit it in a real world scenario जहाँ पे चीज़ें इतनी clean नहीं है. Mundell-Fleming में आपका वो impossible trinity है, and that trinity is about corner solution. Real world में you do not have corner solutions, right? Real world में you have a little bit of this, a little bit of that, and that is what RBI also does. That's what most central banks do. You have to place the RBI's current policy with an analytical lens of Mundell-Fleming. That's the kind of depth that RBI wants. You will rarely find this kind of question in IES. Okay? So ये difference है दोनों के question के तरीकों में. Even when we are talking about paper 1, that is only micro and macro, they do not shy away from explicitly asking you to link it to the real world. Okay, all right. Finally, let's look at the career trajectory. As I said, IAS officer can take you across ministries. DEPR ka largely within RBI. Deep specialization, and of course you can get rotated across RBI's own departments. So here is how I will frame the choice. If your interest is in public finance, development policy,
या स्कीम्स वगैरह में, तो IES आपके लिए बेहतर फिट है. अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, इन सब में बेहतर इंटरेस्ट है तो RBI बेहतर फिट है. एंड इफ़ यू लव इकोनॉमिक्स एंड यू आर स्ट्रॉन्ग इन बोथ, तो दोनों ऑप्शंस कॉम्प्लीमेंट्री हैं. गो फॉर बोथ, राइट? दे आर नॉट कॉम्पिटिशंस. ओके, सो नाउ लेट अस आस्क द क्वेश्चन कि DPR किसको कंसिडर करना चाहिए सीरियसली, एंड आई विल यूज द सेम 4 क्वेश्चन फ्रेमवर्क दैट वी हैव डेवलप्ड इन दिस सीरीज, and we'll answer it specifically for RBI. First question, time horizon. MA के second year में हो, right? Even if you're in the first year, that's fine. You can still consider it seriously. So you are in MA and 1 to 2 is the number of years that you want to dedicate. बढ़िया option है RBI. Risk tolerance क्या है? Risk ज़्यादा है, right? लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है. So it is in between your UPSC and something more short like a corporate job. ठीक है. सो गिवन के सिलेबस ज़्यादा फोकस्ड है, हिट रेट हायर है, तो योर रिस्क टॉलरेंस हैज़ टू टेल यू दैट वेदर यू आर अ वेरी सेफ काइंड ऑफ अ पर्सन और you are a little bit you're a risk lover, you can definitely go for it. It'll take a couple of years of your life. Third question, what is your genuine interest, right? So अगर आपका सही में इंटरेस्ट है मैक्रो में, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में, डेटा में, पॉलिसी रिपोर्ट में, तो डेफिनेटली RBI फिट्स यू परफेक्टली. एंड फाइनली जॉब सूटेबिलिटी क्या है? ये जो काम है, दिस इज गोइंग टू बी एनालिटिकल, इट्स गोइंग टू बी research heavy, writing heavy, so it will suit people who also like this kind of thing, who are good at it. So reading data, right, reports, structured thinking, policy analysis, ये सब आपको अच्छा लगता है, ये सब आप कर सकते हैं, then this job is suitable for you. All right, now let's come to the preparation strategy. कुछ practical चीज़ें बोलूँगी, I'll keep it short क्योंकि we have already talked about them in a lot of detail earlier. But I'll just pick out 4 things. First, concepts before anything, right? Current affairs से शुरू नहीं करना है, current affairs शुरू से करना है. क्या फ़र्क है? Current affairs से शुरू करोगे और concepts को ignore करोगे तो current affairs, लेकिन concepts पढ़ोगे और current affairs शुरू से साथ में करते रहोगे, as your concepts become clearer, your current affairs will start clicking in, and then you'll start seeing a pattern. Okay, so you do your things in order: micro, macro, money, public, international, growth, Indian economy, quant को तुम माइक्रो मैक्रो के बाद कभी भी कर सकते हो, माइक्रो और गेम के बाद. So इन सब की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, साथ में डेफिनेटली करंट अफेयर्स को बाद के लिए नहीं छोड़ना है, करते रहना है. शुरू नहीं करना है उससे, लेकिन शुरू से करना है. नंबर 2, RBI's own reports, you have to treat them as core material. ठीक है, सो इस केस में RBI के डॉक्यूमेंट्स दे यूजुअली मैटर मोर देन द जेनरिक न्यूज़पेपर रीडिंग जो हम करते हैं. इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं? RBI का एनुअल रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, report on currency and finance, financial stability report, and of course your economic survey and union budget. ठीक है. Point number 3, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को साथ में लेके चलना है ना, क्योंकि ये एग्जाम दोनों चीज़ों को टेस्ट करेगा. सो अ गुड स्ट्रैटेजी इज दैट व्हेन यू स्टार्ट विद योर कॉन्सेप्ट्स, आंसर राइटिंग तो एक कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद ही लिखना चालू कर दो PYQs के हिसाब से, और साथ साथ में MCQs लेकर चलो. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज ड्यू टू दिस. लेट्स स्टार्ट विद, सपोज यू स्टार्ट इन जुलाई और अगस्त. यू स्टार्ट विद माइक्रो के बाद मैक्रो और ऐसे ऐसे करते जा रहे हो. जैसे ही माइक्रो ख़त्म हो रहा है या जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहे हैं, प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग. कुछ भी प्रैक्टिस टेस्ट्स ले लो या फिर PYQs प्रैक्टिस करो. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, और साथ साथ में MCQ का प्रैक्टिस जो है वो पैरेलली चालू रखो, बिकॉज इट विल हेल्प इन 2 ways. 1, एक तो phase 1 MCQ बेस्ड है. 2, MCQs कीप योर कॉन्सेप्ट्स alive, right? So you will be on your toes concept wise, right? तो यहाँ से शुरू करना है. Now when you have reached around January, February, तो तब तुम ये जो
answer writing heavy weightage you were giving to it, you start shifting the weight to MCQs. And before say 1.5-2 महीने पहले fully MCQ मोड में शिफ्ट हो जाना है, ठीक है ना. क्यों हमने ये फॉलो किया? क्योंकि जैसे ही तुम्हारा फेज 1 खत्म होगा, विद इन अ मंथ और 2 यू विल हैव फेज 2. सो यू हैव टू गेट बैक टू लॉन्ग फॉर्म एज सून एज फेज 1 एंड्स. Remember, you have to resume long form answer writing. You cannot start long form answer writing from say middle of June. You will have to, जो तुमने फरवरी में उसको छोड़ा था या कम किया था, वहाँ से रेज्यूम करना है. रेज्यूम कर सकते हैं, शुरू नहीं कर सकते. शुरू तुमने उसको जुलाई और अगस्त से ही करके रखना है. तो वहाँ से तुम आंसर राइटिंग शुरू करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, MCQ को साइड लेकर चलते रहोगे. उसके बाद तुमने MCQ पे शिफ्ट कर जाना है. And then as soon as the MCQ exam is over, you switch back. Alright? This has to be the usual strategy. Point number 4, you have to take English seriously. है ना? तो अभी रिपोर्ट लिखना है तो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा. Communication is part of the job. So you cannot treat English as a qualifying formality. It is not. The marks count. Alright, so that's it for today. What is today's one line takeaway? RBI DPR of course हर government exam aspirant के लिए नहीं है. It is specifically for the student who wants to use economics seriously inside India's central bank, and if your strength is these things, right? So your strength is macro, monetary economics, Indian economy, along with the data and analytical writing, तो ये exam तुम्हारे plan में seriously होना चाहिए, ठीक है ना? Yeah, so with this video we have actually come to the end of the high stakes, high prestige exams that economics graduates can pursue. So we have economics optional, Indian Economic Service, and RBI Grade B, DEPR. These are the 3 exams that we specialize in at Econiti. But we also know that not every economic student wants to take on this kind of high risk, high return path, right? So in the next video we also take care of that. What we do is we zoom out. ये हम जो घुस गए थे इसके अंदर, हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, and we will build a career roadmap for economic students who want to try a different kind of path altogether, right? So yeah, that's it for today. हमारे जुलाई बैच के links for the 3 exams, all of them are in the description, and we teach exactly around this philosophy that I have explained to you. Concept clarity, syllabus coverage, answer writing, Indian application, and MCQ practice. Along with that, we will also be tracking progress because we have now Zaptic. Preview lectures सारे channel पे हैं already. Plus, और a more detailed preview course is available free on our course portal. Again, all the links are in the description. And if you want any guidance, all the contact details are on our website. We are always happy to help. That's it from me today. Stay with Econiti. We'll build this step by step.